ISO 27001, 2022. Please realize that the ISO standard, if you were to check the name of the standard first, it is saying information security, cyber security, and privacy protection, ISMS requirements. This is the name of the standard. Yes. So let's Yes. start right from here. We are saying this is all about information security first. So if we were to define what is information security, so instead of doing a guesswork or doing our own definitions, I will want to search the definition of ISO 27001 of information security. In the ISO 27000 series. You guys are able to see my screen well? Yes, sir. It is saying information security is about preservation of CIA. This is what is the definition as per the standard. Preservation of confidentiality, integrity, and availability of information is what is Right. referred to as information security. I will again want to go back to the standard and try and find out the meaning of the term confidentiality, integrity, and availability. You guys should also do it with me. Do a control find in your ISO 27000. Again, I'm doing the same thing. I am writing confidentiality. C should be upper. Yes. It is saying property that information is not made available or disclosed to unauthorized individuals, entities, or processes. This is what ISO 27000 has mentioned. Another term that they are using is integrity. Another term that they are using is availability. Let's try and find the meaning of the term integrity also. Integrity. Preservation of information. Integrity. The property of accuracy and completeness. I would request both of you that every day try and write down the definitions of CIA. This is a very crucial aspect of our learning journey. Please do not try and reinvent. Confidentiality का कोई और meaning नहीं ढूंढना है. Confidentiality, as described in ISO 27001, is property that information is not made available or disclosed to unauthorized individuals, entities, or processes. Integrity is defined as the property of accuracy and completeness, while availability, which is the opposite of confidentiality, let's again do the same exercise. Why am I writing accuracy? It is availability. Availability is the property of being accessible and usable on demand by an authorized entity. Yes, all of us?
Yes, sir. So please understand that the entire ISO 27001 journey will only be about these three terms. All you are trying to do is you are trying to preserve, protect CIA of information. So now that I'm looking at preserving, let's take a couple of examples. Let's say as an organization has a HR document, let's say HR, a salary register, where they have mentioned the salaries of all employees. We are looking at preserving that this information, the salary register, is not made available or is not disclosed to unauthorized individuals. So the first thing that we will need to do is define the authorized user. So who do you think should have access to salary register? Finance team or HR. HR, right? So I will say you are saying a finance team plus HR leaders. I don't want everyone to HR know. lead. Maybe there is someone in the HR who handles payroll handler in the HR, not everyone. And maybe the CEO, the top bosses. No, Right. now CXO. CXOs. So now that we want to preserve our confidentiality, we have to ensure that people other than this list do not get access to this information. So what should I do? I have role-based access control implemented. Correct, everyone? Yes, So sir. now that I've kept this file in a shared drive, and the access is only provided to named individuals or these specific people, other people will not be able to access it. Correct? Right. I will want to encrypt my laptop or whatever endpoint devices these people use. So ensure that you are encrypting your laptop's desktop such that hacker or unauthorized don't get hands on this document. Yes, everyone, with me? All we are trying to Yes, do sir. is now that I know my list of authorized people, I have to ensure that no one other than this authorized person or team, individuals, no one gets the access. So I will put together some basic controls such that the unauthorized are not able to get access to this. That thought, everyone? Yes. Similarly, element number two, we are saying integrity. That the salary register must be accurate. The information in that salary register must be accurate, and that the salary register must be complete. So can be altered by the authorized person. So first, I will have someone do review and approval of the salary register before it is approved. No, Mhm. I will disallow, like you were saying, disallow edit rights to anyone not who does not need document edit.
With me, everyone, so far? Right, sir. I'm essentially saying whatever Yes. information we have, that information must be complete. I have recently written a new book. How do you ensure that it is accurate? Someone has to review that and say every information contained in that book is correct. How do you ensure that it is complete? I had decided that it will have X number of chapters, X number of topics, X number of sections. Someone needs to review that. Correct, everyone? Yes. Maybe CEO of the No? company Maybe or the CEO. Correct. Or the department head, whoever. appointment. And we must disallow edit rights to other people. Similarly, the last term, availability, property of being accessible and usable on demand by an authorized entity. In confidentiality, we were saying unauthorized should not be able to get. Here we are saying authorized should be able to get. So All here the time, also, whenever needed. I am saying same RBAC controls need to be implemented. So it is about RBAC control or taking the backup or and having Everything, the things everything. So first for thing is, different so occasion. let's say you have this salary register. I am the HR manager. I should be able to access it. So first thing you have to do is somehow make it available to the HR manager. Correct? Mhm. So first thing I'm saying is that put that in a folder and have the RBAC controls in place so that you should be able to give Pranay the read access or read and write access. So it is a part of Obviously, confidentiality or availability. RBAC both. control. Both. So RBAC, so A, we are saying that the unauthorized should not get it, but we are also saying the authorized should get it. So it will work two ways. It will prevent Syed from doing it, and it will allow Praveen to do it because he is the authorized. So both are part of the RBAC controls. Just in case trouble comes up, I will want to have backup, etc., etc. So entire journey of the information security management system is about preservation of confidentiality, integrity, and availability. Please go to ChatGPT, identify 5 more controls. Ask ChatGPT to give you a list of 5 controls to preserve confidentiality, 5 for integrity, 5 for availability. Please do that. Confidentiality, you're saying one access control, RBAC or least privilege. Yes. Multi-factor authentication, correct. Data encryption that we discussed. Data encryption, Or both confidentiality. during transit User account. and data in sleep. Classification can help. I'm not too fond of that for right now. NDA, yes. Integrity, we are saying hashing
checksums, Hmm. it leaves a audit trail of whether a document has been edited or not. Fair thought. Change management process, if there is any change, approval of document, etc., etc. Log monitoring will help. Version controlling, backup configuration, digital signatures. Fair. But most importantly, you have to prevent people to be able to edit it. No, असली काम तो वही है. ये सब तो evidence Right. छोड़ेगा. Syed, Right. hashing, what hashing will do is it will leave evidence that Syed has modified it. But the most important thing is to ensure that unnecessary people do not have the access to modify it. Availability, we are saying regular backups, redundancy, high availability, rubbish, disaster recovery. This is saying how to ensure that data does not fail. My first question is, how do you make sure that data is available? It's a, what will regular backup do? Just in case things don't work, you will be able, you Restore it. have that data. Correct, na? So पहले I'm develop- also searching on Gemini. So it is saying redundancy and failover, data backup and disaster recovery, load balancing, DDoS mitigation, proactive patching and capacity management. But first thing क्या है? What are we trying to do? We are looking at ensuring that the concerned people have the access. Right. पहला तो वही है ना, availability का basic हम्म। principle क्या है? Regular backup can help in case of crisis. Redundancy will help. No, redundancy can be helpful for availability. Disaster recovery is solution to a problem. Monitoring and alerting is solution to a problem. But most importantly, we have to we have to ensure that the authorized entity is identified, and we have made provisions such that the authorized entity gets the information on time. Yes, everyone? Correct? Right. So the entire ISO 27001 is about preserving the CIA. And apart from an organizational standpoint, what ISO 27001 has done for us, they have broken your ISO 27001 into two segments. One segment that is referred to as clauses, which run from 1 through to 10. Another segment that is referred to as annexure. Annexure. 93. Correct. Clause 1 to 10, while it is 1 to 10, the actual operative area is from 4 to 10. Annexure broken into 4 boxes. A5, which is a list of organizational controls. A6, which is a set of people controls. A7, which is a set of physical controls. And A8, which is a set of technological controls. Why ChatGPT gives the different output for different people? For example, Like I search for CIA, how to control CIA. okay. Output is different for you and me. What did ChatGPT give you? I have already copy pasted it, na? That हाँ, वो तो the ones that we were discussing, correct. Okay. ये तो होता है ChatGPT. ChatGPT is not more than 70% correct. Right. Unless it gets used to you. Unless you start pointing out what errors is it making, what is the improvement opportunity. It will make a lot of mistakes. So if you see the standard, like I'm saying,
It has 10 clauses. Clause number 1, scope. Clause 1, scope. Clause 2, normative references. Clause 3, terms and definitions. Let's read this. This document specifies requirements for establishing, implementing, maintaining, and continually improving an information security management system within the context of the organization. So whenever you are implementing ISO 27001, always think vis-a-vis that company. Don't think about it randomly. It is not one solution fits all. You will have to start looking at what is the organization into, what kind of business are they into, what kind of information do they handle. Basis that information, you will have to design your information security management system. This document also includes requirements for assessment and treatment of information security risks tailored to the need of the organization. ISO 27001 is very focused on risk assessment, which we will later go through. This is very, very focused. In fact, the auditors also lay a lot of emphasis on the risk register. Are you guys with me? Yes. Right. The requirements set out by this document are generic and are intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size, or nature. So while the standard is applicable to all kinds of organizations, small, big, different types. You are a manufacturing company, I'm an IT company, someone else is doing something else. But please realize that at the end of the day, the organizational maturity, organizational size, organizational type will have a lot of bearing on the ISO 27001. With me, everyone? बहुत important है ये सोचना that you may, I run a very small organization and you are from Infosys. The level of documentation can't be the same, correct? No? Yes, sir. It further goes on to say, excluding any of the requirements from clause 4 to 10 is not acceptable. You can't take any exclusion from. No exclusion allowed. From clause 4 to 10. Everything mentioned is auditable. Okay. Exclusion, लिखा तो नहीं है, but exclusions can be sought from the annexure. So nothing from a requirement standpoint. Let's look at clause number 2, normative references. The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the reference document applies. So it is saying there are two kinds of documents. One that they are calling as dated reference. Another is that they are calling as undated reference. So if you read a standard name which says 27001 2022, but 2022 means the version of the document, the year in which it was published. So whenever you see year mentioned in the reference, we are calling it dated reference. Whenever you see dated reference, the edition cited applies. While if you see undated reference, I only told you, please refer to ISO 27000. So here, because the year, the version number is not mentioned, so you will have to first find out what is the latest document and then refer to that document. With me?
Yes, sir. Clause 3. For the purposes of this document, terms and definitions given in ISO 27000 apply. Undated reference does not mention 27,000 2018. Correct? KRF, when for all your terms and Okay. definitions, go and refer to ISO 27000. Nothing, only giving you a reference to ISO 27000. The version right now is 2018. So the actual standard will start from clause 4. Clause 4, context of the organization. They are looking at you starting to think through in terms of the organizational context when you are implementing your ISO 27001 or any other ISO standard. Please remember, all ISO standard will have the same structure. Every ISO standard will have clause number 1 as scope, 2 as normative reference, 3 as terms and definition, 4 as context. Now, if you see the subpart 4.1, understanding the organization and its context. Let's see what it demands. The organization shall determine internal and external issues. You will have to find out what are the internal issues that could in fact impact information security. What are some external issues that could impact information security? Suddenly, with Uncle Trump coming in, there is a likelihood that this warfare could damage the internet carrying wires inside the sea. That could impact our information security from an availability standpoint. Everyone, Yes, sir. internal issues like attrition could impact. So your attrited employee went outside and shared confidential information to his new firm. There could be internal issues like lack of training, lack of clarity of ISMS roles. I have a lot of external suppliers. All organizations will have internet providers. What if that external provider is unable to provide services on the defined time? His outage could impact us. Yes, everyone? Yes, sir. So you are required to create an exhaustive list of internal and external issues that could impact your information security management system. What ideally we do is you guys are able to see my screen, correct?
Yes. If there is lack of leadership commitment, this has been marked as an internal issue. Regulatory and compliance changes, external issue. Inadequate risk assessment process, internal issue. Inefficient monitoring and logging, internal issue. Emerging cybersecurity threats, external issue. With me? So you will have Yes, to sir. make a list of issues and mark them as internal or external. In later 6.1, it will have to start thinking in terms of risks. Ye clause number, what you see in your column number 5 and beyond. But right now, it is only asking us to have a list of internal and external issues. Fair, everyone? As an auditor, the auditor will ask you to showcase these documents when he has come to audit. If you are a consultant, you will have to work with the organization to prepare this document. We are calling it internal and external issue register. Fair? Copy link, share, copy link. I've shared the documentation kit on the chat. Please see if it is accessible to you. Accessible? Yes, sir. Clause number 4 को It's डाउनलोड showing करो. 4 पे। ठीक, इसमें Clause number 4. ये सारे डाउनलोड कर ले। Sorry? इसमें 5 डॉक्यूमेंट्स है। इसमें 5 डॉक्यूमेंट्स है, वो पूरे पूरा फोल्डर ही डाउनलोड कर लूं डाउनलोड मैं? कर. हाँ, पूरा फोल्डर ही डाउनलोड करना. ठीक। Yes, sir, download कर लिया. Accessible है. एक बार go through the internal external issues. Internal and external.
Done? Yes, sir. So weak backup is a part of BCP, Business Continuity Plan. Line Say that number again. 7. Internal audit, line number Hmm. 7. So weak backup and recovery practices issue. Detailed discussion backup are not tested regularly. Opportunities strengthen the BCP, Business Continuity Plan. Correct. Opportunity में BCP ही आएगा. तो आपने जो बैकअप लिया है, आर यू चेकिंग इफ इट इज वर्किंग और नॉट? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. कितनी बार होता है कि बैकअप है बट जब इस्तेमाल करने लगो, जब यूज करने में आओ तो वो काम ही नहीं कर रहा है. Questions are If you are not able to retrieve it, then we are in trouble. Then we are in trouble. Now we are headed into 4.2. It is saying, understanding the needs and expectations of the interested parties, the organization shall determine interested parties that are relevant to ISMS और उनकी requirements क्या हैं,
and the relevant requirements of these interested parties. Let's go back to our folder. Ideally, these interested parties are right from your employees to your vendors to your clients. And you will need to understand, identify what are the requirements of the client. Ki kya requirement hogi, Syed, from information security management system? Client is expecting that please ensure that my data is not misused. My data is kept confidential. CIA मेरे data का तुम control रखोगे. That is the client expectation. Yes, everyone. Yes. Yeah. Data should not be exposed. So you please don't mess with Normally. my confidential data. In some cases, it will be around personally identifiable information also. They are expecting that please ensure SLA compliance. What is the employee expecting? I need to know what I'm supposed to do, and I need to be trained on the tools that are required to do my job. No. एक तो कि मेरा डेटा है तुम्हारे पास, मेरा PII है तुम्हारे पास, so my personally identifiable information has to be handled well. Correct? Yes. And whatever you need me to handle, whatever you need me to do as part of my information security job, please give me the required training. Correct, no? Yes. What does the top? Awareness. So this is the list of your interested parties, right from your vendors to your IT providers to your investors to vendors, client, top management, employees. What ISO is asking you is for column B and C. Interested parties and their requirements. And key requirements. Please go through, look at it once. Done? Yes, sir.
म्यूट हो आप, अगर हमसे बात कर रहे हो तो। आप इसे कहते हैं सर। हम्म। तो फ्रीक्वेंसी डिफाइन भी की हुई है ना आपने इस पे। स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ। लास्ट जी कॉलम डी, जी सॉरी एफ जी, व्हेन टू इम्प्लीमेंट दीस थिंग्स। वो तो परफॉर्म द आएगा, जो रिव्यू। क्लॉज नंबर 6.1 में पहुंचेंगे ना, तो जितने हैं अच्छा ये सब 6.1 के लिए है। अच्छा, तो हमारा इंटरेस्टिंग चीज इसमें बी एंड सी है। बस अभी के लिए 4.2 के लिए बी और सी चाहिए। तो फिर पार्टीशन की रिक्वायरमेंट। करेक्ट। मेरा एक काम कर दीजिए, कोई भी एक डमी कंपनी ले लो। सैयद, विच कंपनी आर यू विथ? एसएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ओके। एडवांस वाले। कुछ भी एक डमी कंपनी ले लो, बीपीओ, बैंक, और जी दोनों मिलके साथ साथ मिलके चैट जीपीटी से मुझे इंटरेस्टेड पार्टी और उसका रिक्वायरमेंट का लिस्ट और इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज का लिस्ट। ठीक है, ठीक है सर। एक 10 मिनट्स दोनों साथ में मिलके करो, सो दैट यू कैन डिस्कस ऑल्सो। दोनों से एक आदमी अपना अपना स्क्रीन शेयर करो एंड वर्क टुगेदर। 4.1 वाला इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज, 4.2 वाला इंटरेस्टेड पार्टी एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है सर। आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? ये मैं लास्ट टाइम एक क्लास में कर रहा था यार। अच्छा, आप अटेंड कर चुके हो क्या? मैं लास्ट संडे एक क्लास अटेंड करा था, उसमें मैं ये पूरा बनाया था। तो अरे नहीं ये नहीं। किस इंडस्ट्री पे बेस्ड बनाया था आपने? मैं कुछ बैंक के पर बनाया था अच्छा लास्ट टाइम। आई थिंक सो, जहाँ तक मेरे को। हाँ एक फिर मिनट से बना लो, शायद। फिर से बना लो। हाँ ये तो है मेरे पास, एक मिनट मैं शेयर कर दूँ मेरा स्क्रीन। गो टू शेयर स्क्रीन। मेरा स्क्रीन अब आ रहा है, विजिबल है? हाँ हाँ, ये मैं लास्ट टाइम के क्लास में बनाया था, एफडीसी बैंक फाइनेंसिंग बैंक पे बनाया था चैट जीपीटी से। एक एक डिस्कस करो, एक एक पढ़ो, सो दैट यू आर एबल टू से कि ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है कि नहीं है। सर ISO 2700 27,004. They are organization structure. They are factor inside the organization. मेरा ढूंढा था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड स्पेशल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट नंबर 1 तो मेरे मेरे हिसाब से तो सही है, आईएसएम के हिसाब से। इंटरनल इशू, तो इसमें इशू नहीं, इशू समझ में नहीं आ रहा मुझे, इशू क्या है इसमें?
Public करके इश्यूज बोलते हैं ये इसमें ये इश्यूज है ना, ये जो इंटरनल इश्यूज जो डिफाइन है क्लॉज नंबर 4.1 के हिसाब से। management commitment toward information security, segregation and duty across the department, decision making and escalation. What इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर हम इसको जो 4.1 हमारे पास है उसके टी कॉलम से कंपेयर करें तो इसमें क्या है? लेक ऑफ ISMS लीडरशिप कमिटमेंट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें इशू क्या है। व्हाई वी आर राइटिंग दिस? ये इंटरनल है ना, ये इंटरनल में यहाँ पर इशू यही है ना, ये लैक ऑफ ISMM राइट। लीडरशिप कमिटमेंट है Lack of everybody ISMS leadership is a commitment. We have used lack of ISMS means there is a problem with the ISMS leadership commitment. और जो हम लोगों ने लिया हुआ है उसमें तो ये चीज नहीं है मेंशन कुछ की। What is the problem with the organization structure? These factors, information security policies, existing cyber security policies. इसमें हम यूज कर सकते हैं lack of existing cyber security policies और weak cyber security policies। तो ये ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे इस चीजों को। इसमें हो रहा है भी अजनक। ये तो मैं सिर्फ ये चैट जीपीटी से निकाला, तो चैट जीपीटी का एक्यूरेट भी नहीं रहा हाँ था। हाँ राइट राइट राइट, वो हाँ, तो तो एग्री है, हिसाब से इसलिए मैं तो वी आर डिस्कस, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इसको करेक्ट है या नहीं। करेक्ट नहीं है तो करेंगे फिर। एक्सेस कंट्रोल प्रोसीजर तो is not, access control procedure is not well defined। थोड़ा जूम कर दो, Person and थोड़ा जूम कर दो। जूम करूंगा, एक मिनट। Organizational structure. There are factors inside the organization that affect the information security management system. Define roles and responsibilities for issue की तो तरह लिखो। हाँ इशू के राइट, बिकॉज इट ये दे रहा है कि वेयर यू कैन फाइंड द इंटरनल इशू, हाँ, बट वी हैव फाइंड आउट द सम इंटरनल इश्यूज। तो बनाओ बनाओ हमको बनाओ। So go to ChatGPT. Open your ChatGPT, Sayed. लिखो जरा, write down. what could be the organization structure issue नहीं, according to please list down. Please list down. okay, Please list down 20 internal and 20 external issues. Internal and external issues क्लॉज with respect to ISO 27001. हाँ ठीक है, for clause लिख सकते हो। With For respect to clause? clause 4.1 of ISO 27001 2022. तो ISO 2001 में column 2100 Colon 2022. 22 मारो एंटर। lack of employee information security awareness, right? अब ये सही आ रहा है सर। कॉपी सर करो, आपने आपका एक करवाते नए हैं तो एक्सेल आता है शीट में पेस्ट सही। करो। सर मेरे सवाल पूछने में कुछ हम कर लोग दूंगा, तो इसका वो वाला मैंने भी लास्ट टाइम ऐसे ही दिया सर्च हुआ किया था था पर मुझे टाइम पे। वही स्ट्रक्चर में दिया जिसमें आपको दिया सही। सर ने जब टाइप करवाया तो सही आ गया। जी अभी तो बहुत हाई लेवल सोचा है हमने, डिपार्टमेंट वाइज बनाना पड़ेगा। राइट राइट। We'll have to make this department wise. चलो
ये स्क्रीन नहीं हो रहा। कॉपी उसमें नहीं है ना, ये एक्सेल में आईपीसी में बताओ। तो एक इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। उसमें HTTP पे मेंशन करो, इसमें प्लीज तो मेक ए इसमें एक्सेल शीट फॉर दिस। सही है, आप HTTP को ही बोलो कि एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर दे इसके लिए, उसी से हम फेच करते हैं। इसमें ये मार दूं बस, वो ये दे देगा। हाँ राइट, देखते हैं बनाता है। चलो ठीक है, दे दिया। ठीक। तो थोड़ा उसको बड़ा कर दो तुमने। ओके। Do the same for visible external हो गया। issues. एक्सटर्नल Inter- इंटरनल और इसमें बहुत आते हैं, दोनों दे दिया। अच्छा इसमें आ गया अलग है। अलग टैब टैब क्रिएट कर अच्छा दिया है दोनों को। ठीक है ठीक है। हमारा क्लॉज नंबर 4.1 कंप्लीट हो गया। 4.2 करो। ये प्रिपेयर करने के बाद ना मुझे से शेयर भी कर देना। हाँ, कॉपी कर लो। सही मैं कर दूं। Please list down Close interested 4.2। parties for interested parties and their requirements. बट हमने यहाँ पे सर कोई भी वो सिलेक्ट नहीं की इंडस्ट्री, ठीक है, कर ये लेना, जेनरिक हो गया। बात के लिए कर लेना। नहीं अभी तो जेनरिक है, लेकिन इसको इंडस्ट्री वाइज बनाएंगे। बस यहाँ डालो मैं, प्लीज लिस्ट डाउन 20 20 डालिए, 20 रिमूव 20 कर दो। हटा दो, 20 हटा दो। लिस्ट डाउन ये एक्सटर्नल इशू। नहीं, ये इंटरेस्टेड पार्टी। इश्यूज। लिस्ट डाउन, वो हटाओ। 20 इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज हटाओ। वहां पे लिखो इंटरेस्टेड पार्टीज एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। इशू तक डिलीट कर दो, इशू भी डिलीट कर दो। इशू भी निकाल दो। हम्म। दिस इज डाउन। 20 इंटरेस्टेड पार्टीज 4 के बाद ना। अच्छा ठीक है, 20 इंटरेस्टेड पार्टी एंड देयर रिक्वायरमेंट। पार्टी एंड देयर रिक्वायरमेंट। क्लोज को 4.2 कर देते हैं। ये आईएसओ रहने दो, ये आईएसओ 27100 2002। वो तो वो रहेगा। तो रहना ही है, वो तो रहना ही। हाँ, इशू इशू हटा दो। एक मिनट उसके बाद वाली फिर लाइन से लिखो ना, हटा दो, पूरा हटा दो, पूरा हटा दो। फ्रेश लिखते हैं, फ्रेश लिखते हैं वो। हाँ ये ठीक हो गया। 20 हटा दो वहां से। प्लीज लिस्ट डाउन इंटरेस्टेड पार्टीज एंड रिक्वायरमेंट फॉर क्लॉज 4.2 ऑफ ISO 27000। हाँ, मारो एंटर। एक्सटर्नल एम्प्लॉय टॉप मैनेजमेंट, ये तो आप वाला आ गया सर। कॉपी कर, ऊपर जाओ, कॉपी करो, ऊपर जाओ। वो कॉपी का बटन आ रहा था, हाँ कॉपी करो। जी। नए पेज में उसी कॉपी एक्सेल किया। शीट में पेस्ट कर लो। ये तो वो दूसरा जो है नया ना। वाला एक्सेल शीट था उस पे जी सर। न्यू ओपन टैब एंड बना लेते हैं। पेस्ट हो गया। गो थ्रू दिस। प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, Secure services, regulatory compliance. सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट, KPI से। ये तो सर आप वाली कॉपी है। नहीं यार, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ठीक है, अभी अभी के लिए ठीक है शायद। एज इट PII इज वही आ कंसिडर गया। करना बहुत जरूरी है भाई दोनों के लिए। फॉर 4.1 4.2 पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन। तो अभी से क्या करना ना, सैयद, व्हेनेवर यू आर राइटिंग, जी सर।
फॉर ISO 27001 एंड GDPR कर देना या एंड DPDPA कर देना। डीपी डीपी ठीक है सर। अभी ये तो हो गया ना सही यार। एनडीए कंप्लायंस से ले डीपी डीपी एक्ट आल्सो जीडीपीआर कंप्लायंस। वो तो एग्जाम्पल दिया है हमारे में, जैसे वो कस्टमर इश्यूज जो उसने आइडेंटिफाई किए, कस्टमर जी इश्यूज सर। में उसने DPDPA का रिक्वायरमेंट नहीं डाला। कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, दिख रहा है जी फॉर सर। पहला वाला। लेकिन क्लाइंट का PII बहुत डेंजरस होता है, सही। एम्प्लॉयज का PII बहुत डेंजरस होता है। तो सही। एम्प्लॉय वाले में भी PII होना चाहिए, कस्टमर वाले में भी PII होना ये चाहिए, पीवाई चाहिए वेंडर एंड कस्टमर बोथ। फॉर ऑल। मतलब जहां तक या पॉसिबल हो, वेंडर का जी हो, कस्टमर का हो, सही। बिजनेस पार्टनर का हो, PII इज अ वेरी डेंजरस कमोडिटी certainly. So every organization will have to start thinking in terms of DPDPA, GDPR. Cool है। We good so far? यस सर। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। We continue on the other side. ठीक ऐसा है ठीक है, हम प्रैक्टिस करते चलें तो ठीक है ना? हाँ जी हाँ सर। राइट सर, ये प्रैक्टिस ही, यही मेन यही तो सही है प्रैक्टिस ही है। मेन तो प्रैक्टिस ही है भाई। ठीक है, क्योंकि ठीक खाली है। आप थ्योरेटिकल चढ़ते जाएंगे तो समझ नहीं आएगा ना हाँ, करते जाएंगे तो प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट बोलते थे। ठीक है। फिर आप मुझे ये वाला एक्सेल शीट शेयर कर दो। हाँ कर देता हूँ मैं आपको भी। We meet 9:20. 9:20। ठीक है इसमें ऑर्डर टू। अभी कहाँ वर्क कर रहे हो आप? जी। अभी कहाँ पर हो आप वर्किंग? अभी तो फिलहाल काम नहीं है मैं अभी। अच्छा अच्छा। पहले पहले सऊदी में काम कर रहा था 15 इयर्स। अच्छा अभी अच्छा रिसेंटली वही। बस ये ब्रेक लिया। इसमें अटैच करके दे दो। Yes. तो फॉर्मेटिंग
प्रवीण आपका नंबर बता दें मेरे को, मैं आपके मोबाइल में वो कर देता हूँ। 8587 क्या नंबर है? 8587 87 888 88 क्या है? 019 जीरो 888 है जी 9 एट 019। फाइव 8587 888 019। हम्म। थैंक यू रिसीव। ये 4.1 और दोनों ही है ना इसमें? जी हाँ, दोनों ही है। जो स्टार्टिंग है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज जो लिखा हुआ है वो 4.1 है। उसका जो नेक्स्ट थर्ड स्लाइड है वो वाला आपका वो है। मैं अभी भी सर्च कर रहा हूँ तो आप वाला आ रहा है जो स्टार्टिंग में बनाया था, वो वाला आ रहा है। लेटर इंफॉर्मेशन। ठीक है।
Should we continue? Right. तो मैं आई वाज सर्चिंग कि अगर मुझे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट करना है तो मुझे किन किन मैंने क्या मेंशन किया था, मुझे किन सर्टिफिकेट के लिए रिक्वायरमेंट होगी फॉर इंश्योरेंस कंपनी. My question was that what all the standard need to be followed by insurance company. तो ChatGPT ने दिया इन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड मेंशन किए इसमें. Obviously, बहुत सारे होंगे. 27002, 27701, 2230, but they are interrelated with the information security somehow. We'll talk. Don't worry. अच्छा, नहीं आपने जैसा कि डिस्कस किया था ना कि इसमें डीपीडीपी भी मेंशन कर दो, आईआरडीए भी क्योंकि मेंशन कर दो. DPDPA is information security related. Information security में एक एलिमेंट आएगा पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन का. जैसे मैंने मेंशन किया था. If it is payment is being made by any payment gateway, then you have to understanding of PCI DSS. Correct. So one should have the understanding of all these things, right? Not mandatorily. These are different अच्छा. skills, but होगा तो अच्छा होगा. Clause 4.3 is about scope. When you are implementing ISO 27001, you will need a mandatory document. एक mandatory DI है. Mandatory document is a scope statement. Here, you are essentially mentioning what services are covered, what locations are covered, and you have to give a reference of 4.1, 4.2, and 4.4. Let's read it first. The organization shall determine the boundaries and applicability of information security management system to establish its scope. While determining the scope, the organization shall consider external internal issues, requirements referred to in 4.2, interfaces and dependencies between activities performed by the organization and those performed by other organizations. The scope shall be available as DI. जहां कहीं भी ये टर्म मिले पूरे स्टैंडर्ड में, this means it is a mandatory document. So when I'm writing down the scope of the ISMS, so for example, let's say I am currently a company called AIG. So AIG provides various services. Let's say we choose to implement ISO 27001 for our training services only. Okay. And we'll cover only Noida office. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हाट इज द कंपनी इनटू. सो मैं एक काम करता हूँ, मेरा एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है जिसका तुरंत खत्म किया मैंने, ग्लोबल सर्वे सॉल्यूशंस. ये कंपनी ये 4 काम करती है. दिख रहा है आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे? सर्वे प्रोग्राम, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, फाइनल सर्विस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया.
और मैं चैट जीपीटी को ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। हेल्प prepare the scope statement with regards to ISO 27001 2022 clause 4.3 for global survey solutions, providing the attached services, the office location is उत्तर प्रदेश, नोएडा 142। yes. देखो क्या लिख के दिया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्टिंग द डिजाइन डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ market research support services including survey programming, data processing, panel services, end-to-end project management services to domestic and international clients from the office located in this। ये नहीं मानेगा एक्सटर्नल एजेंसी, ये नहीं लिखना चाहिए आपको, बाकी सारा ठीक है। कितने ठीक है सर। तो क्या नहीं रेफर, मानेगा? ये आपने लिख दिया ना फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो मैं एज अच्छा। ऑडिटर कैसे वेरीफाई करूं कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सपोर्ट करते हो, कितने कंट्री को ऑडिट करवाओगे? ओके। Then I will not want to mention this as international clients. The survey end-to-end project management services from this office, बस ये सब ऐड कर सकते हो चाहो तो। विथ में आपको ठीक है सर। लोकेशन लिखना मैंडेटरी है, सर्विसेज लिखना मैंडेटरी है। You have to mention what services are within the scope, location, what locations are included, and you must refer to 4.1, 4.2, 4.4 बस। But the document that we end up creating has slightly more. ये तो पूरा डॉक्यूमेंट बनेगा, तो पूरा जब डॉक्यूमेंट बनेगा तो थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो। एक्सक्लूजन जरूर लिखना चाहिए स्कोप स्टेटमेंट में, मैंडेटरी नहीं है बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस। What all controls have you chosen not to include as part of your ISO 27001 2022 implementation? With me? yes sir। दो कंपनी है मेरे पास अभी, प्लीज उनका बना दो, मैं कंपनी का नाम भेज रहा हूं। One company that I am currently consulting is Sugam Group. Another company that I am consulting is Elofic Industries. गूगल करो, इनका प्रोडक्ट सर्विस निकालो, इनका लोकेशन निकालो और उसका स्कोप स्टेटमेंट बनाओ। ओके ठीक है सर।
प्रवीण कौन सा आप इसमें बना रहे हैं? बोलो आप अलग डिफरेंट बनाने को। मैंने वैसे शुभम का सर्च कर लिया था, कर रहा हूँ मतलब। आप अच्छा ठीक। लॉजिस्टिक। बैकपैक ऑटोमोबाइल फिल्टर में इंडस्ट्री। दादाजी दादाजी गुरुदेव, आप व्यर्थ प्रयास न करें। अफसोस है, नहीं। अच्छी तरह से लियो बैठिए, लियो बैठे का पता बताएं। अभी बनाए, तुम जा सकते हैं। इसको बचा सकते मेरा परि एक शिष्य नहीं, बल्कि उनका गुरु। घमंड भले ही मैं अब नहीं रहे तो एक बात मानो, मेरे दादाजी को श्राप दो। आज से तुम मेरे बेटे एलेक्स। मुझे गोद लेकर तुम्हारी किस्मत खुल गई। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? जिनसेंग। ये हेलोफेक का तो कुछ सर्विसेज शो नहीं कर रहा इसमें, तो खाली बस अवार्ड्स दे रहा, कंट्रोल पैनल मास्टर आप गुस्सा सक्सेस। मत होइए, मैं बदलती हूँ मैं। इस अपोकलिप्स की वजह से थोड़ा सा खाना क्या दे दिया, ये खुद को देने को तैयार हो गई। अरे कैसा? सच में आपको मेरी जरूरत। हाँ ठीक है। सिया तुम ठीक हो? मास्टर ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें ये कपड़े दूं, प्लीज इसे पहन लो। नए कपड़े? सिया क्या तुमने मास्टर को खुश किया? ये उनका इनाम है। अच्छा किया तुमने। तुम्हें कोई चोट भी नहीं लगी है। मैंने सोचा भी नहीं था मास्टर इतने जेंटल होंगे। सिया ये तुम्हें क्या हुआ? ये कैसा सकता है? मास्टर पहले तुम्हारे साथ सोने के लिए कितना कुछ कर रहे थे, पर आज क्यों? लगता है बॉस ने ऐसी कीमत दी जो मास्टर मना नहीं कर सकी। ये सब तुम लोगों के लिए। चारों को बेचने का प्लान तो नहीं कर रहे? हाय, मैं हूँ हिमाद्री, द फाउंडर ऑफ त्रिवाई हिमाद्री, एंड ये है मेरी बिजनेस जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। हमेशा से मेरा एक ही गोल था, एक। सोनिया, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? अरे रुको जरा, मेरा मतलब तुम अचानक मेरे घर क्यों आ गई? दादाजी ने बोला था तुम्हें इस वीकेंड उनके बर्थडे पर बुलाने के लिए। हाँ। ईशा, तुम्हें पता है ना जो एंटीक तुमने मेरे लिए चूज किया था वो ट्राई कलर अब बनाए प्रवीण। Yes. हम्म। Done?
रूम ग्रुप के लिए सर मुझे यही मिला जो मैंने सर्च किया है। कस्टमर बिजनेस इंफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक शिपमेंट डाटा, फाइनेंस एंड कंप्लेंट्स टू रिपोर्ट, डिजिटल एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, email and communication system, network device, server, endpoint, cloud services, Which I physical mentioned. security. And it is a Yes, good sir. practice to mention, and this is a good practice to mention these things. Okay. Times and addresses which related to confidential applicable interested parties, customer, employee, vendor, logistic partner, regulatory authority, customer trade authority, exclusion I mentioned. Yes, multiple eyes. उसने एक्सक्लूजन नहीं दिए थे पर मैंने उसे दोबारा पूछा एक्सक्लूजन के लिए तो उसने एक्सक्लूजन तो वही जब दिया। पढ़ेंगे तब तुमको समझ में आएगा, अभी तो नहीं पढ़ेंगे। एक्सक्लूजन हमको कंट्रोल के अगेंस्ट में लिखना है। जैसे सुगम अच्छा। ग्रुप में कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो सॉफ्टवेयर राइट। डेवलपमेंट वाले जो कंट्रोल्स है ना, जो जीएसएस में भी तुमने देखा होगा, जीएसएस के स्कोप अच्छा। स्टेटमेंट में वो 4.3 वाला जो मेंशन्ड है वही कॉपी पेस्ट हम्म। कर, दोनों में, एलोफिक में भी और सुगम में भी। डन। ये सर मेरा तो लैपटॉप हैंग हो गया तो कोशिश करूँ उसको वापस। नो प्रॉब्लम। सर ये कंपनी जो
LFA का कुछ प्रोडक्ट का कुछ बता रहा है ना, ये प्रोडक्ट का बता रहा है इसमें, सर्विसेज का कुछ इसमें ऑप्शन शो नहीं कर रहा हाँ, इसमें। वो ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सही, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कैबिन, हाँ, बस वो यही इमेज लगा दें इसमें। हाँ, या कॉपी पेस्ट कर लो। अच्छा, एक मिनट, ये आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर करा मैं ये सुगम ग्रुप का। इसको मुझे अच्छा, करेक्ट, ठीक है। सिर्फ एक्सक्लूजन में जीएसएस से लेके कॉपी पेस्ट कर देना, जब एनेक्स्चर पढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एक्सक्लूजन्स। सही मैंडेटरी नहीं है एक्सक्लूजन मेंशन करनी, बट एडवाइजेबल है। सही। तो एलोफिक का और इसका पूरा 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट कर लेना प्लीज। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए, I'll see you guys next Friday, Saturday. या ठीक है सर, ठीक है सर। चाहोगे तो कल 12 बजे वाला बैच भी ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कल रिपीट ही 12 होगा। बजे है कल क्लास, ये रिपीट आपका बैच फिक्स्ड है फ्राइडे सैटरडे। देयर इज अनदर बैच सही, हैपनिंग सैटरडे संडे 12 o'clock। किसी दिन फ्री रहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है सर। वो ये जो ग्रुप में जो आप लिंक जो शेयर कर रहे थे वही है ना सर ये? हम्म। ठीक है सर, मसला नहीं, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, एज रिवीजन हो जाता। हाँ, रिवीजन हो जाता है, बिल्कुल। सही। सर एक सवाल ये है कि अब ये जो रिकॉर्डिंग जो हो रहे है सर, या हम ये फिर मतलब हम ये कैसा देखेंगे फिर, अगर इसको भेज दूंगा मैं, एक लिंक भेज दूंगा, दिखना उसमें चाहे तो सारा ही। श्योर, उसी में रहेगा? ठीक मैं है भेज सर, दूंगा, भेज दूंगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।